First, you have some time to look at questions 1 to 3. Now we shall begin. You should answer the questions as you listen, because you will not hear the recording a second time. Listen carefully and answer questions 1 to 3. Many of you already have a reasonably firm idea of the general subject area you wish to study. Others are more open and searching for ideas. Whatever your situation, I hope you find that we have a course that meets your needs. Our firm aim is to be a student-centred institution with a special emphasis on flexibility. This begins with our attitude to access. We judge people on their motivation and commitment to study as much as, if not more than, formal qualifications. This is reflected in the vitality and diversity of our student population. Some of our students come direct from sixth form or college. Before you hear the rest of the conversation, you have some time to look at questions 4 to 10. Now listen and answer questions 4 to 10. Others are coming into higher education after a short or long gap from formal education. Some are seeking a specific set of skills with a particular job or profession in mind. Others are retraining or studying to give their careers a new direction or dimension. Some are learning about the very latest scientific, technological and commercial knowledge. Others are stretching their minds on sensitive environmental, social and cultural issues. Even a casual observation of the mix of our student body indicates that we're close to our aim of being a polytechnic for the whole community. To meet our students' needs, we have 500 academic and a further 500 support staff committed to good quality teaching, high standards, and sensitive and sympathetic student care. We have probably the longest experience of understanding and dealing with the differing needs of a diverse student population. I hope you'll find a suitable course at the Polytechnic College. If you want to come to the college and we consider you suitable, we'll do our best to find you a place. And when you're here, we'll work hard to make your experience enjoyable, stimulating, and educationally rewarding. That is the end of part 1. You now have half a minute to check your answers. Now turns to part 2. Part 2. Everyone knows that we have achieved a huge amount in terms of space exploration. First, you have some time to look at questions 11 to 16. Now, listen carefully and answer questions 11 to 16.
Everyone knows that we have achieved a huge amount in terms of space exploration. The space race between ourselves and Russia went on for nearly 20 years, but we were the first to land a man on the moon. At that time, the space race was very close, and the Russians very nearly got to the moon before us. For me, the most exciting invention, and the invention that really showed we were ahead in the space race, was the reusable space shuttle. It was first successful in 1981 and has since been used on many missions. The reusable shuttle can carry astronauts on space missions and can serve as a laboratory in which to conduct experiments. It can be used to transport equipment to space stations or to collect or repair satellites. The shuttle carries between 5 and 7 crew members. When a mission is complete, the shuttle fires thrusters, which propel it back into the Earth's atmosphere. It then glides down to make its landing. Before you hear the rest of the talk, you have some time to look at questions 17 to 20. Now listen and answer questions 17 to 20. Although the remains of very early ovens have been found in many parts of the world, it was here that they were first used frequently in people's homes. In ancient Greece and in other parts of Europe and Turkey, people used ovens to bake bread. But it seems there was only one large oven that everyone shared. Here, the remains of villages from 5,000 years ago show that each mud brick house was constructed with an oven, and that baking bread and perhaps cooking meat was very common. The ovens were made of clay and shaped like a beehive. Inside they had shelves, so that a number of loaves could be cooked together, and an opening at the bottom from which ash could be removed. That is the end of part 2. You now have half a minute to check your answers. अगर लिसनिंग के साथ साथ आप स्पीकिंग की भी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारी अपनी एप्लीकेशन है बेबी कोड आइल्स, प्लीज डाउनलोड करो। ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी हमने डाल दिया है। यहाँ पे आप एआई टीचर को जितने चाहें उतनी बार स्पीकिंग टेस्ट दे सकते हो, जब चाहें तब, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि टीचर आपको आपके बैंड स्कोर बताए, आपकी मिस्टेक बताए और कैसे आप 5 बैंड से 7 बैंड इंप्रूव कर सकते हो, तो प्लीज यूज करो मेरा प्रोमो कोड IELTS50। Do not forget, my promo code is IELTS50. Now turns to part 3. Part 3. You will hear 2 business studies students discussing a presentation they'll do on an article on working effectively in groups. First, you have some time to look at questions 21 to 26. Now listen and answer questions 21 to 26. So, Brad, what did you think of the article on group work? Oh, hi, Helen. Yeah, it was pretty good, with helpful pieces of advice on how to make group work effective.
I think we were lucky to be given such a straightforward text to present at the management skills seminar. Yeah. Actually, shall we discuss it now? Have you got time? Sure, it's only a 10-minute presentation, so we just need to explain and then give our views on the main points raised in the article. I'll jot down some notes. Right. So, there are 3 main sections. I suggest we start with listening. Yeah, effective listening in groups, because it's not something that's frequently covered on courses in our field. No, and we should say that in the presentation. Yeah, and also effective listening's pretty simple, you know. I don't think it's hard to learn. Well, people think it's easy, but in my experience, most of us tend to be very lazy listeners. Okay, I wouldn't argue with that. Something I do think we should emphasize is the power of the listener's posture, gestures, etc., in making speakers feel respected. Not that you're just waiting for them to finish before jumping in with your own ideas. Uh-huh. Okay, right. The next section is on goal setting. Let's make sure we're clear what the article says on this. Yeah. Well, firstly, it says that all group members must be given time to explain their own goals. That's it, yeah. And then, did it say that the whole group should agree on common goals? That's a bit too strong. It's more that everyone's agendas should be equally acceptable. But it does say that goals have to be realistic, you know. Achievable within a particular time? You've got it. That's really what the article's saying. There isn't really any point in having ideals if group members know they won't come to anything within a reasonable period. So, I think a summary covering those points will be enough for that part of the presentation, don't you? Yeah. Now, the last section is about conflict resolution. Actually, I thought it was the worst part of the article. Me too. I don't think it went into sufficient detail on the issue. Actually, I thought it devoted too much space to it, but that it was all rather boring, you know? It didn't mention some of the more radical theories. Absolutely. I found that really irritating. Right, and also I think it could have said more about conflict sometimes being healthy in groups. Absolutely. It just mentioned rather glibly about how we should avoid thinking of winners and losers, and that quick resolution of conflict is always desirable. Without explaining what these terms mean? Well, it gives quite detailed definitions, but doesn't develop a proper argument. Right. So, for the presentation, I think we just give some definitions and then explain what we felt were the weaknesses in the article's treatment of conflict resolution. Yeah, good. Now you have some time to look at questions 27 to 30. Now listen and answer questions 27 to 30. So, let's think about what we have to prepare for the actual presentation. Well, I suppose we'll use PowerPoint, but I'm hopeless at using it, especially if it has any visuals. I really have to look into doing a course on it because I know I'll need it in the future. Don't worry, I'm quite happy using PowerPoint and I'll put it together when everything else is ready. That's a relief. But yes, do that later. Okay. Now, I heard the tutor saying we have to include some well-chosen quotations from the article. I'm not sure if we do. I'll email him to find out. No need, I can just have a look at the specs he gave us when he set the task. That'll be quicker. But the tutor definitely said we have to prepare a handout to go with the talk. I'm not really sure how we do that. Sarah did one last year. Who's she? She's doing the same option as me on marketing. I'll ask her advice on what to include. Great. So that just leaves the bibliography at the end. I suppose it'll mainly be articles. Yeah. So we'll just look on the web, and we can leave that till later. But we've been advised against that. Well, we could have a look through some journals in the library. I think we should start by looking through module handbooks. I think that'll give us some good leads. Yeah, you're probably right. So that's all the topics. That is the end of part 3.
You now have half a minute to check your answers. अभी तक बेबी कोड ऐप डाउनलोड नहीं की तो यहाँ पे सिर्फ स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग सारे के सारे फ्री में मॉड्यूल अवेलेबल है, वो भी लेटेस्ट कंटेक्स्ट के साथ। और तो यहाँ पे आईएलटीएस की लाइव क्लासेस भी देते हैं आईटीपी अप्रूव्ड टीचर फ्री में। तो प्लीज डाउनलोड करो, ट्राई करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक ये बात पहुंच सके। Now turns to Part 4. Part 4. You are going to hear some facts and figures about Australia. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Now I should tell you that the country of Australia is made up of 6 states and 2 territories. These are the Australian Capital Territory, New South Wales, the Northern Territory, Queensland, South Australia, Tasmania, Victoria, and Western Australia. The national capital is Canberra. Right, let's turn to the Australian economy. Australia has a prosperous Western-style capitalist economy. Australia is a major exporter of agricultural products, minerals, metals, and fossil fuels. Commodity prices have a big impact on the economy. Australia suffered from the low growth and high unemployment typical of the OECD countries in the early 1990s, but the economy has expanded at reasonably steady rates in recent years. In addition to high unemployment, short-term economic problems include how to balance output and inflation and how to stimulate exports. The economy is made up like this: agriculture, 3.1%, industry, 27.7%, services, 69.2%. The labor force has a similar pattern. The total labor force is 8.2 million. 34% work in finance and services, 23% work in public and community services, 20% work in the wholesale and retail trade, 17% work in manufacturing and industry, and 6% work in agriculture. What are the chief industries of Australia? They are mining, industrial, and transport equipment, food processing, chemicals, and steel. What are Australia's main agricultural products? They are wheat, barley, sugarcane, fruit, cattle, sheep, and poultry. And who do we sell our products to? At present, our chief export market is Japan, which takes 24% of our exports. After that, South Korea takes 8%, and New Zealand and the U.S. each take 7%. In years to come, however, we expect China to become a significant trade partner. China already supplies 5% of Australia's imports. This is the same amount as New Zealand. Meanwhile, we take 1/5, in fact 22% of our imports from the U.S., 17% from Japan, and 6% from the UK. So what sort of things does Australia import? Well, we import a lot of machinery and transport equipment, especially computers and office machines.
also telecommunications equipment, and in addition, we have to import oil and petroleum products. So let's move to the subject of communications in Australia. We have an estimated 8.7 million telephones and 9.2 million televisions. There are some 134 television broadcast stations and 325 radio stations. The related subject of transport is naturally very important in such a big country as Australia. Let's look at highways first. There are two kinds of highways, paved and unpaved. Paved highways are regular roads with a permanent surface. But actually, we have more unpaved highways, around 60%, than paved, when all the country roads are included. In addition, Australia has a railway network of over 38,000 kilometers. But you'll probably find it hard to believe how many airports we've got. 10? 20? 50? No, the total is 443. Of course, this includes many short runways on farms and in the outback. There are only 9 airports with runways of more than 3,000 meters. That is the end of part 4. You now have half a minute to check your answers. अभी तक बेबी कोड डाउनलोड नहीं की? यहाँ पे लाखों बच्चे फ्री में आइल्स क्लियर कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बेबी कोड आइल्स. तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. ट्राई करो. डू नॉट फॉरगेट माय प्रोमो कोड IELTS50. ओके. हेलो जी, वेलकम टू टीम आइल्स ड्रीम. और आज हम करने वाले हैं टास्क जिसमें हम बताएंगे कि ये चीज़ ज़रूरी क्यों है और आपको क्या लगता है कि अपना ओपिनियन बताओ कौन सी चीज़ ज़रूरी है और किसके बारे में ओपिनियन देना है. वो ये है कि पेरेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू टेक केयर ऑफ़ देयर चिल्ड्रन. कि जो आजकल के पेरेंट्स हैं वो ये चीज़ सीखना चाह रहे हैं कि उनको बच्चे की केयर कैसे करनी है. तो क्या ये ज़रूरी है सीखना? अपना ओपिनियन दो कि ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, और अपना ओपिनियन देना है. पेरेंट्स आर अटेम्प्टिंग टू अक्वायर मीन्स टू गेट द स्किल नेसेसरी टू लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर their children's well-being. In this essay I will suggest why is this required along with my opinion. तो सिंपल सा हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया जिसमें हमने पैराफ्रेजिंग की और थीसिस लाइन लिखी. पैराफ्रेजिंग में हमने जो उन्होंने स्टेटमेंट में पूछा था कि पेरेंट्स आर ट्राइंग टू लर्न हाउ टू टेक केयर, तो हमने बोल दिया पेरेंट्स आर अटेम्प्टिंग टू अक्वायर मीन्स लर्न. अटेम्प्टिंग मीन्स ट्राई, अक्वायर मीन्स लर्न द स्किल, जो कि लुक आफ्टर मीन्स टेक केयर. पैराफ्रेजिंग मीन्स हमने थोड़ी वोकैबुलरी चेंज करके थोड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज करके हमने वही बात अपने वर्ड्स में लिख दी, उसको हम पैराफ्रेजिंग बोलते हैं. और थीसिस लाइन लिखी है कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में पूछा था वही हम थीसिस में लिख दे कि ये चीज़ हम हमारे ऐसे में बताने वाले हैं. लेट्स रीड द बॉडी पैराग्राफ 1. टू बिगिन विद मैनी चिल्ड्रन ट्यूटर द एक्सपर्ट देयर इन चिल्ड्रन ट्यूटर द एक्सपर्ट इन देयर फील्ड. कि बहुत सारे ऐसे जो चिल्ड्रन को कैसे देखभाल करते हैं वो चिल्ड्रन वाले ट्यूटर होते हैं, एक्सपर्ट होते हैं अपनी फील्ड में. दे विल गिव सम एक्सपर्ट ओपिनियन, कोई अच्छे ओपिनियन दे सकती हैं. एंड दे ऑल्सो हैव मैनी एक्सपीरियंस इन रेजिंग चिल्ड्रन. उनके पास एक्सपीरियंस होता है कि बच्चे को कैसे रेज करना है, कैसे बड़ा करना है, कौन सी हैबिट्स सिखानी है, कैसे किस टाइम पर क्या चीज़ करनी है. दे कैन टीच न्यू पेरेंट्स वेल. और वो जो न्यू पेरेंट्स होते हैं उनको सिखा सकते हैं. सच एज़ व्हाट चिल्ड्रन शुड ईट डेली, कि उन्हें क्या उनकी डाइट प्लान की कौन सी चीज़ उन्हें किस एज में खानी चाहिए, किस एज में उनको खाना देना शुरू करना चाहिए. हाउ टू रेज चिल्ड्रन इंटरेस्ट इन हॉबीज़, उसको किसी पर्टिकुलर हॉबी में उसका इंटरेस्ट कैसे डिवेलप करना चाहिए. तो ये सारी चीज़ें जो पर्सन एक्सपर्ट है, चिल्ड्रन ट्यूटर है, वो न्यू पेरेंट्स को सिखा सकता है. एंड डैट कैन मेक किड्स पेरेंट्स टू फील कंफर्टेबल.
इससे क्या होगा कि जो बच्चे के पेरेंट्स हैं कंफर्टेबल फील करेंगे, उसको बच्चे को रेज़ करना एक बर्डन और स्ट्रेस नहीं लगेगा, वो फन वे से अपने चाइल्ड को ग्रो कर सकते हैं एंड हैव अ लेस प्रेशर एंड व्हेन दे टेक केयर ऑफ देयर ओन चिल्ड्रन रादर देन लूज देयर हैंड। तो ऐसा अगर वो करते हैं, ज़रूरी क्यों है कि इससे वो कंफर्टेबल फील करेंगे, लेस स्ट्रेस फील होगा वाइल रेजिंग देयर चिल्ड्रन, ठीक है, उन पर कोई प्रेशर नहीं आएगा, वो अपने बच्चे की अच्छी तरह से हॉबीज़ डेवलप कर सकते हैं जो अच्छी वाली होती हैं, अच्छा खाना दे सकते हैं जो उनकी हेल्थ के लिए अच्छा होगा। तो ये चीज़ के लिए ज़रूरी है। बट ऑन दी अदर साइड रीचिंग चिल्ड्रंस ट्यूटर इज़ देना एक्सपेंसिव, कि ज़रूरी तो है लेकिन अगर हम ऐसे किसी ट्यूटर के पास जाते हैं तो वो बहुत महंगा होता है। फॉर मैनी नॉर्मल फैमिलीज़, जो नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिलीज़ हैं वो पेरेंट्स अपने नहीं ज्वाइन कर सकते ऐसी क्लासेस, क्योंकि ये ऐसी क्लासेस बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इसलिए ओनली अ फ्यू पेरेंट्स हु लिव इन अ अर्बन सिटीज़ कैन अफोर्ड द सैलरी ऑफ चिल्ड्रन ट्यूटर्स। दैट इज़ ऑल्सो द रीज़न वाई मोस्ट फैमिली prefer to ask the elder in their family when they have a kids rather than pay a children tutor, कि एक्सपेंसिव बहुत है, ठीक है, इसको हर एक पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकता, स्पेशली जो विलेज में रह रहे हैं, जो रूरल एरिया में रह रहे हैं। तो इसलिए वहाँ के लोग क्या करते हैं कि अपने जो एल्डर होते हैं, जो उनके बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उनकी हेल्प लेते हैं, उनसे पूछते हैं कि कौन सी चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, रादर देन पेइंग द फीस टू द चिल्ड्रन ट्यूटर। एक रीज़न ये है कि क्यों नहीं ज़रूरी, क्योंकि ये एक्सपेंसिव है। सेकंड रीज़न क्या है, इन एडिशन मैनी पेरेंट्स बोथ नीड टू गो टू द वर्क एवरी डे, दे डोंट हैव इनफ टाइम, कि आजकल दोनों पेरेंट्स वर्किंग पेरेंट्स बन चुके हैं, उनके पास इनफ टाइम ही नहीं है कि वो ऐसी क्लास में ज्वाइन कर सकें कि बच्चे की टेक केयर कैसी करनी है। तो उनके पास टाइम नहीं है लर्न करने के लिए। मोस्ट ऑफ देम विल सेंड देयर चिल्ड्रंस ग्रैंड पेरेंट, कि ज़्यादातर लोग अगर वो ऐसे लोग हैं वो अपने बच्चों को अपने ग्रैंड पेरेंट्स के पास छोड़ देते हैं। एंड हैविंग चिल्ड्रन ट्यूटर विल वेस्ट देयर मनी एंड देयर वैल्यूएबल टाइम। तो इस चीज़ के कारण नहीं ज़रूरी, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है अटेंड करने के लिए, और ग्रैंड पेरेंट्स से हेल्प ले सकते हैं, और एक एक्सपेंसिव है इसलिए भी नहीं ज़रूरी। ज़रूरी क्यों है, क्योंकि इससे वो बहुत सारी चीज़ें लर्न कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं क्यों है, क्योंकि एक्सपेंसिव है और टाइम ज़्यादा वेस्ट करता है, उनके पास टाइम नहीं है टू लर्न द न्यू नॉलेज। तो ये हमने बता दिए, एक में हमने बताया क्यों ज़रूरी है, और पैराग्राफ 2 और 3 में बताया कि क्यों नहीं ज़रूरी है। तो ओपिनियन किस में जा रहा है कि क्यों नहीं ज़रूरी, कि मुझे लगता है कि ये चीज़ नहीं ज़रूरी। In conclusion, if a new family of threesome wants to learn some key point on taking care of children, having a kid tutor will nice choice, कि अच्छी चॉइस है। क्यों है वो हमने 1 में बताई थी बॉडी पैराग्राफ में। बट इफ़ पेरेंट्स डोंट हैव इनफ स्पेयर टाइम एंड डोंट हैव इनफ मनी, देर इज़ नो नीड टू फाइंड चिल्ड्रन, कि अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो ज़रूरत नहीं है। अगर कंफर्टेबल है, ठीक है, बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादा नुकसान ही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रही है, ठीक है, आप उस चीज़ के कारण ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। तो ये था हमारा आज का टास्क, यूनिक सा टास्क था, ठीक है, हम डेली नहीं करते, हमारे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उसमें सिमिलर से टास्क हमें करवाए जाते हैं। तो जब ऐसा कोई यूनिक टास्क हमें हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है तो हमारा जो माइंड है वो थिंकिंग करना, सोचना बंद कर देता है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ट्राई किया करो कि डिफरेंट तरीके के आप टास्क प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि पता नहीं होता कौन सा टास्क हमारे एग्ज़ाम में आ जाना है। तो प्लीज़ ट्राई किया करो कि डिफरेंट कैटेगरीज़ के टास्क किया करो, जैसे कि हमने आज किया जो था चिल्ड्रन ट्यूटर के बारे में, कि उसकी पेरेंट्स को लर्न करना चाहिए कि क्यों उनकी टेक केयर करनी चाहिए, कि कैसे उनकी टेक केयर करनी चाहिए, कि ये लर्न करने की क्या ज़रूरत है और क्या ज़रूरत नहीं है। तो वो हमने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, ठीक है, आप इससे आइडियाज़ ले सकते हो। एंड दिस इज़ इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।